Hello guys, this is Sukada Kotak this side from EduCARE. Welcome back to our channel for daily current affair videos. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 3rd and 4th November 2022. Before starting with the current affairs for the day, don't forget to follow our Instagram channel EduCARE Official and also join our Telegram group where regularly different type of quiz are conducted and some new fun and interesting facts are uploaded regarding GK and current affairs. Starting with the first current affair for the day, Ballistic Missile Defence Interceptor was successfully tested. India conducted the first successful flight test of the Ballistic Missile Defence Interceptor missile from the APJ Abdul Kalam Island off the Odisha coast. It is capable of neutralizing a long-range missiles and aircraft. The AD-1, that is air defense, is a long-range interceptor missile that is designed for both low exoatmosphere and endoatmospheric interception of long-range ballistic missiles as well as the aircraft. 2 CRPF women officers get promoted to the IG rank. Seema Dhundia and Annie Abraham. These are the 2 women officers जिनको CRPF, that is Central Reserve Police Force, में promote किया गया है towards the rank of Inspector General, that is IG rank. ऐसा पहली बार हुआ है after the induction in force of 1987. Inspector General सीमा ढूंढिया लीड करने वाली है बिहार सेक्टर के CRPF को एंड IG एनी अब्राहम लीड करेंगी जिनको पोस्ट किया गया है एज द रैपिड एक्शन फोर्स, दैट इज RAF ऑफ द CRPF. ये पहली बार ऐसा हुआ है कि RAF को एक वुमेन इंस्पेक्टर जनरल लीड करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अफर्म कर दिया है डेथ पेनल्टी विच वाज अवॉर्डेड टू लश्कर ए तोयबा टेररिस्ट मोहम्मद आरिफ फॉर द 2000 रेड फोर्ट अटैक केस. 3 लोग इंक्लूडिंग 2 आर्मी ऑफिशियल्स मारे गए थे इस इंसिडेंट में. डिसमिसिंग द रिव्यू पिटिशन, बेंच ने ये चीज ऑब्जर्व की एंड कोर्ट ने एक्सेप्ट किया दैट द प्रियर्स दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मस्ट बी एक्सक्यूड फ्रॉम द कंसिडरेशन. एज पर द बेंच, हैविंग रिगार्ड टू द एंटायरली ऑफ द मैटर, हिज गिल्ट इज प्रूवन. इसीलिए रिव्यू पिटिशन को रिजेक्ट किया गया था. मोहम्मद आरिफ ने एडमिटली किया है कि वो एक पाकिस्तानी नेशनल है and was arrested on 25th December 2000 in the case and was awarded a death sentence by the Supreme Court of India. यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेमिंग ऑफ होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन द अरुणाचल प्रदेश एज डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर. अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में बढ़ गया है एंड अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है 7.7% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अगेंस्ट द 6.43% जो सितंबर के महीने में था. हरियाणा में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला है विच इज एट द रेट ऑफ 31.8% अमंगस्ट ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स. ये फॉलो किया जाता है, नेक्स्ट हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान दैट इज 30.7%, जम्मू एंड कश्मीर में 22.4%, झारखंड में 16.5% एंड बिहार में 14.5%. जहां पे दूसरे कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे बहुत कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला वो थे मध्य प्रदेश 0.8% पे, छत्तीसगढ़ 0.9%, ओडिशा 1.1%, गुजरात 1.7% एंड कर्नाटका 2.7%. एडटेक मेजर बाइजू ने रोपडन कर लिया है फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को एज द फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स सोशल इम्पैक्ट आर्म, दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल. मेसी प्ले करते हैं पेरिस सेंट जर्मेनियन एंड कैप्टन एंड द अर्जेंटीनियन फुटबॉल टीम के भी वो कैप्टन हैं. उन्होंने साइन किया है बाइजूस के साथ एक अग्रीमेंट एंड प्रमोट करने वाले हैं द कॉज ऑफ इक्विटेबल एजुकेशन. बाइजू के को फाउंडर दिव्या गोकुलनाथ ने इस पे कमेंट करते हुए बोला कि मेसी ब्रांड एम्बेसडर है एंड ये सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं है कि वो एक ग्रेट प्लेयर के साथ साथ एक ग्रेटेस्ट लर्नर ऑफ ऑल टाइम भी है.
Coming to the daily current affair quiz, the first question for the day is, where is the National Tribal Dance Festival taking place? The next question is, which steel plant in India became the first to receive the Responsible Steel Site certification? The next question is, from where did DRDO conduct the flight test of the Ballistic Missile Defence Interceptor? The next question is, 7 states including the state of Karnataka, Kerala and Andhra Pradesh celebrate their foundation day on which of the following day? Mention your answers in the comment box below. The person who is giving a correct answer will be given a shout out in the next upcoming video. Coming to the answers of the questions asked in the previous video, which city is the host of the India Chem 22 conference? The correct answer is New Delhi. The next question was, RBI has launched which type of central bank digital currency in its pilot phase? The correct answer is wholesome. The next question was, WHO has issued first ever fungal priority pathogens list comprising of how many health threatening fungi? The correct answer is 19. That's it, guys. Like this video and subscribe to our channel for daily current affair videos. Shout out to Priya, Tanvi Nayak and Computer Man for giving the correct answers in the previous video. For classroom, live class, recorded lecture, books, ebooks facilities, you can contact on the number which you can see on your screens. For more such MCQ questions, download the app from the link which is given in the description box below.